1 and Unit 2 and Unit 3. Under the Block 1 consists the total 4 units, and I discuss the all 4 units today with presentation and some slides prepared by me for the course BHSF 101. So please all are stop your share the screen. Subroto Das, stop your share the screen. Please click stop presenting. Please click stop presenting button. Subroto Das, stop your presentation, presenting the slide. Thank you. বন্ধ করতে দাও। Shubhajit বিশ্বাস, if you stop your share sharing, so it's impossible to me to share the screen. Shubhajit বিশ্বাস. PSHF 101 Human Society Extension. Well, okay. Now start. Today's VSHF 101 Foundation course in Humanities and Social Sciences. Myself, Dr. Oritra Ghosh, Academic Counselor of IGNOU, and also Assistant Professor of Sociology, Srirampur Girls College. First block 1 consists the 4 units. Unit 1, the human society. First of all, what is society or meaning of society? Society is a web of social relationship, how to behavior, how to engage with other people, close interaction, and web of social relationship means a society. When people close with relationship, close with behavior, then form a society. Society is a composed of a large number of people who form relatively organized, self-sufficient, enduring body. Society is composed of interacting individuals and interacting groups sharing a common culture. Society is a systematic network of social relations, and it is the venue where the dynamics of cooperation and conflict occurs. Human beings at the center of study of all disciplines, especially the study of social sciences or humanities. Society is thus a complex area which over the years has been simplified with the emergence of discipline like history, political science, economics,
anthropology, sociology, etc. Around some specific aspects of the social reality, but the humanities are not the center of study of all these social sciences. They have their different academic personality, but all of them are moved by a central dynamic of holding the human society together. But knowledge or education may not always help people move forward. It may also be possible that such knowledge is generated and spread, which may throw people back into the past of superstitions and religious fears. It may provoke religious fundamental and terrorism, which we are witnessing these days. Mainly, the Professor Noam Chomsky is perspective American observer who has emphasized on the need to keep knowledge from degrading into the propaganda. For this purpose, it is very important why study society for humanities and social sciences. Why study society? First of all, to understand the world we live in and the intricate realities of group interactions and social processes, to explain and understand human behavior in a society, to determine the existence of groups, their functions, nature, and characteristics, to understand how and why human beings act the way they do. That means when we talk about the business management, tourism, then first of all we must study the human behavior, must study the society, must study the business perspective. So how and why human beings act the way, this is the much more important for our study society. Mainly famous sociologist and also the founding father of sociology, Auguste Comte, maintained or mentioned the three stages in understanding society. First stage, that is the theological stage, next metaphysical stage, and then scientific stage. Theological stage, the society is an expression of God's will. Here in this stage, all functions to be performed by God. This is the belief of that stage. Next, the metaphysical stage. Here, people were less likely to see society as the work of supernatural forces and placed more emphasis on the forces of nature. Here, mainly the nature is very much important. Nature is much more relevant to affect our society, our nature. So metaphysical stage is very much related to forces of nature. And then the scientific stage, here all understanding related to very much scientific way, very much rational way. In this stage, mainly the society discuss, society enlarge very uh, rational and scientific measurement. Next is, what are the types of society? Mainly in evolutionary process, five types of society mentioned in very renowned sociologists and social scientists. One, hunting and gathering societies, horticulture, fishing and pastoral societies, agrarian societies, industrial society, and post-industrial society. Hunting and gathering societies, here societies that rely primarily or exclusively on hunting wild animals, fishing, and gathering wild fruits, berries, nuts, and vegetables to support their diet.
until humans began to domesticate plants and animals about 10,000 years ago. All human societies were hunter and gatherers. Today, only a small fraction of Excuse world me, sir. I population was just or telling something. Some tribal people are trying to population. join your class. Hello, sir. Hello, Sir, this is Anuradha. hello. Some people are trying to join your class Okay. How do you know that? because people are messaging me on the IGNOU group. Uh, All right. no, here. Yes, a person named Sanchita Roy is trying to join, sir. But no people in queue. Not only Sanchita, there's a lot of students waiting to join this session, so. Mm. But request ignoring. Any IGNOU official here? Yes, yes, I'm admitting. Yes, admitting. Some people are there. I'm admitting. Okay, okay. So I continue my class. Today, only some society or of society and world population support themselves in this manner, and they survive only in isolated, inhospitable areas such as deserts, the frozen and dense rainforest. Given the close relationship between hunting and gatherers and their natural environment, hunting and gathering tribes such as the Bushmen and the Paijimis and other Indian tribes also in very much popular Birhor may provide valuable information for anthropologists seeking to understand the development of human social structure. In Indian perspective, uh, some tribe like Birhor, Shauriya Pahadia, and Malpahadia also, Sir, they are still now hunting and gathering societies. They completely isolate in our mainstream society and preserve their own culture, preserve their own language, and preserve their own civilization. They are not accustomed with development, so-called development for mainstream society. Government many initiative undertaken for these tribal groups and Indira Awas Jojana under this tribal area make a much more so-called mainstream society's house, but they are not live in this house. They live their own making house and called Tanda. So this hunting gathering society is much more isolated for our mainstream society. Next, in evolution process, hunting gathering society evolved the domestication of plant and animals transform societies in various ways. That is the producing more allowed societies to become larger. The Your voice is domestication breaking of up, sir. plants and animals. Hello, Excuse me. Excuse me, mentor. I'm audible. Yes, Excuse me, mentor. yes. Yes, Speak. your voice is breaking at every moment, and I have a request
to everyone here to please close your camera. Everyone except the mentor, please close your camera. Your voice is continuously Roger that. breaking, sir. Connection issue. Hello, I'm audible? I think he's not able to hear us. Also, a question to the mentor. Mentor, can you hear me? Yes. Actually, the topic you are discussing, many students have joined right now. So, will you please say what you are actually discussing about? Is it the questions from the assignment or some basic knowledge about what is actually this subject is about? Please elaborate first that one. Thank you, sir. Okay. Okay. Today I Sir, could you please the share your BSHF. PPT with us? Yes. Sir, could you please share your PPT with us? Okay. Yeah, sir, please share your I PPT share on the this. screen. Yes. हेलो हेलो सर Hello. सर ये क्लास सिर्फ हिंदी में होता है क्या सिर्फ इंग्लिश नहीं, इंग्लिश से हम प्रेजेंटेशन देने पर हिंदी में भी कुछ कुछ बातें बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है, मगर हम ट्राई करेंगे हिंदी में भी बोलने के लिए। ठीक है? ओके, थैंक यू सर, क्योंकि सर मेरा सब्जेक्ट हिंदी से है सर। हाँ, ठीक है। सब्जेक्ट तुम्हारा हिंदी में लिखने कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो इंग्लिश से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, हिंदी में भी हम बोल देंगे। ठीक है? मैं जो स्लाइड को शेयर किया है वो देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते? वैसे अभी दिखाई दे रहा था, कुछ देर पहले वो स्टक समवेयर। ठीक है, अब ठीक है ना? ओके सर, ये यस सर मेरा टुडे आई डिस्कस BSHF 101 ब्लॉक 1 का जो 4 यूनिट है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से है वो भी हम बोल देंगे, जो असाइनमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। So today I discuss unit 1, unit 2, unit 3 and unit 4. Total 4 is under the block 1. Course name BSHF 101. I continue unit 1, studying human society. Sir, could you please state your voice? Sir, your voice is continuously disturbing, sir. Sir, your voice is breaking a lot. We can't Hello? hear properly. Hello, sir. Yes. Hello, can you hear me, sir? Everybody, please keep your Yes. mic mute. Right. Hello. Hello. All choose your video and mic. Everyone except the सर। Hello. Hello. Yes, sir. Everyone except the mentor, please switch off your mic and camera. सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर मैं बोल रहा था हेलो सर। Yes. सर कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर हमारा असाइनमेंट कब जमा होगा सर, और एग्जाम कब होगा, इसके बारे में भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए हमें सर, बिकॉज ऑलरेडी 3 महीने सिर्फ पकड़ सब जो इंफॉर्मेशन इग्नू साइट से तुम्हारा मिल जाएगा। ओके ओके सर। So continue my class.
अभी भी साउंड ब्रेक हो रहा है कि ठीक है? Excuse স্যার me, আপনার sir. সাউন্ডটা Hello, খুবই sir. Can ব্রেক you hear হচ্ছে, me? শুনতে পাচ্ছি না। Can you hear me? It is fine now. Vivek, right? I think there is a continuous network anomaly from your side. आवाज आ रही है। And सब who लोग is Sani NCC, अब man? सब लोग आपका जो ऑडियो म्यूट कर दीजिए और जो वीडियो है वो स्टॉप कर दीजिए। So the horticulture, fishing and pastoral societies here advances in housing technology and home industries such as weaving, pottery and leather making. Efficiency and effectiveness of tools and weapons have markedly improved. Then the technological capacity to produce a surplus of food also results in pronounced social inequality. So सामाजिक जो सम्मता है वो मजबूत करने के लिए जो टेक्निकल कैपेसिटी उसको बढ़ाना चाहिए, वो हॉर्टिकल्चर, फिशिंग और नेशनल सोसाइटी में हम देख रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी से जो सामाजिक सम्मता और सोशल इनइक्वालिटी है इसको बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। with more resources to fight for conflicts became prevalent and slavery has grown widespread. So हॉर्टिकल्चर, फिशिंग एंड पेस्टोरल सोसाइटी के बाद जो हम देख रहा है एग्रेरियन सोसाइटी आ रहा है, वहां पर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, नंबर वन, द एनिमल ड्रॉन प्लाउ प्रोड्यूस्ड फूड फॉर मोर एफिशिएंटली देन द हैंड टूल्स यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। सो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी स्मॉल एरिया में हम देख रहा था, एग्रेरियन सोसाइटी में हम animal drawn plow produced food or far more efficiently than the hand tools used in horticulture society. So the greater surplus of food produced by agriculture enabled a large proportion of the population to engage in various special activities. Here money emerged as a mean of exchange, replacing barter as a system for trade among people engaged in specialized activities. Communication and transportation facilities are greatly improved for the production, agrarian production, purchase, communicate. For this purpose, communication and transportation facilities are greatly improved. And the next, the expansion of trade sparked the growth of cities as economic and political centers. So जो अर्थनैतिक और राजनैतिक जो केंद्रीयता है वो ज्यादा तरीका से इस सोसाइटी में ग्रोथ हुआ है, and the social power of the elite greatly expand and exercises absolute control over large empires. So agrarian societies is very much important in our evolutionary process of society, and still now we observe this agrarian society. And next, in evolutionary process, industrial society is much more improved. For this industrial society, the main characteristics of this society, the economy is industry based. So जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का अर्थनैतिक व्यवस्था है वो मेनली डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री, एंड देयर इज materialization of professional and technical jobs that call for exceptional training. इंडस्ट्री के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, इसके ऊपर निर्भर करके ज्यादा जॉब्स मेंटेन करता है, और these jobs are very much important for industrial society. Transport is efficient and communication has numerous networks.
production is based on the use of mechanical power and cities leads to decline in agriculture production, and cities developed by industry and make a industrial based society. Next, this evolutionary society is very recent. That means post industrial society. In this post industrial society, economic transition has cropped up from a manufacturing based to service based. पहले जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी था वहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग is very essential for industrial society, but today manufacturing based society changing your function and from manufacturing based to service based is the basic features for post industrial society. There is a dissemination of nationalized and worldwide capital. There is enormous privatization. Privatization is the basic features of post-industrial society. Not only public domain, private domain for post-industrial society. The magnitude of blue collar or manual work decreases, and for this white collar people or labor and technical work prevails. Academic knowledge increases at the expense of industrial benefits. Here in post-industrial society, academic knowledge and service is essential and one of the important essential features of post-industrial society. Hello, sir. Hello. Hello. Sorry for introduction, sir. Sir, please give the script. আপনার ভয়েসটা ব্রেক হচ্ছে। কিন্তু আমি তো কানেকশনটা তো ব্রেক করতে কেন? হ্যাঁ স্যার, আপনার ভয়েসটা একটু অডিবল নেই। Sir, continue class because weather is not good. Hello. But we are able to hear. We are able to hear you correctly. There is no problem. I think you have network problem. Those who are not able to hear. हेलो हेलो करो ना, जाके जे क्वेश्चन আছে ও सीधा क्वेश्चनটা आस्क करो। हेलो हेलो करो ना। ওকে। সো আপনার স্ক্রিনে যে বটম সেন্টারে একটা বক্স আছে ওটা একটু হাইড করে দেন, লাইক জাস্ট হাইড ইট, বটম সেন্টার অন দ্য স্ক্রিন। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ইয়া ওকে ওকে। In post-industrial society, there is enormous privatization. Privatization is the one of the important basic features for post-industrial society, and the here service-based society is one of the important features for post-industrial society. So here in this context, very much important, knowledge versus propaganda. What is knowledge and what is propaganda is very essential for this purpose. Studying society essentially means knowing that society. We study a society and create more knowledge,
correct knowing of a society would require what to know, what is true knowledge, and what are its ingredients. Thus, studying society will contribute to healthy generation and growth of knowledge, and the student becomes a creative and responsible knowledge seeker. So here, uh, what is society? Society is a web of social relationship. What is knowledge? Knowledge is much more creative and responsible knowledge seeker. But how is true knowledge after all learned and created? As said before, knowledge has to be distinguished from propaganda, which is normally dished out by powerful people. Such propaganda, one should be aware, actually come in mixed packages, some right but some are false or wrong or sensational. Recent researches have shown that it was mostly due to the media impact coming from the most powerful nation that people accepted the invention of Iraq as real. But same weight of media impact was not given to the true information that Iraq actually did not possess weapons of mass destruction. As a result, though the world has gradually come to know about this true information, the American public does not believe so. So that is the knowledge. What is the true knowledge? And knowledge is the propaganda. So this is a difference between knowledge and propaganda. In the connection of knowledge and propaganda, many-sided nature of social reality. Social reality not a one-sided. Social reality is a multi-sided or many-sided. Another dimension to knowledge seeking consists in recognizing that a phenomenon under study is actually many-sided, though it looks like a simple occurrence. This can be explained with the help of an analogy from nature. We have seen the phenomenon of snow melting. But what we overlook at the same time are other phenomena occurring at the same time in association with it. Snow is moving, water is timing, etc. All social phenomena are similarly many-sided, though we accept one side for action at a time. A balanced study would at least recognize that there are many sides to the phenomenon under study. So, all these sides to a phenomenon, especially the important ones, present themselves to a student as two or more norms of a dilemma. We are also frequently solving this dilemma. When you go to a market to buy some goods, you have solved this problem because you have decided what to buy over what not to with the limited money you have. But in other areas, we are usually not keen on resolving these dilemmas, which make choices difficult. In such a situation, one unfailing advice has come from the different perspective in a course doing things when you are in a dilemma. Here, important note by Gandhiji: safely take the next step if by doing so you are contributing to the efforts aiming at wiping out the last drop of tear of the last man. So here social reality not a single sided, this is a many sided, and at a time overlapping the different social reality, overlapping the many social phenomenon in a one time. So
Gandhiji's advice related to knowledge and propaganda, Gandhiji's advice on the most important goal for a student in her pursuit of knowledge. The real difficulty is that people have no idea of what education truly is. We access the value of education in the same manner as we access the value of land or of share in the stock exchange market. We want to provide only such education as would enable the student to earn more. We hardly give any thought to the improvement of the character of the educated. The girls, we say, do not have to earn, so why should they have educated? As long as such ideas persist, there is no hope of our ever knowing the true value of education. When we talk about girls' education, women empowerment, women's education, at a time we talk about girls' marriage in early age, child marriage. So this is the basic difference between the knowledge and propaganda. Knowledge says the all humans are equal, especially male and female, and education for male or female both are important. But on the other hand, true reality is much more girls or women not take up basic education in our village India. And also a child marriage prevalent in village India. So this is a basic difference between the real knowledge and propaganda. So in this first unit, unit 1, the important question for assignment as well as also the final exam in this unit, the 5 questions are very much important. So student, please request note down these questions for your assignment as well as your final exam. First question, what do you mean by society? This question for marks 6. Why study society? Short note on 3 stages of society. This is a 10 marks question. Write a note of types of society, 20 marks question. And the Sir, what was the 10 marks question? short note, 10 marks, write a note on types of society, 20 marks. And the 3 stages of society, that is 10 marks. 3 stages of society, right? Yes. 3 stages of society for 10 marks, and the write a note on types of society, that is 20 marks. And short note on knowledge and propaganda is for 6 marks. Hello sir, sorry but please sir Hindi. क्या सर आप हिंदी तो यहाँ पर Sir, these questions are not there on the assessment paper. हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन है Sir, the first question is written that how do we study society discuss in the assessment नहीं, paper. ठीक है, हम वो असाइनमेंट पेपर लेकर नहीं बोल रहे हैं, हम इन जनरल जो यूनिट है वो डिस्कस कर रहा है, उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर दिया है. Okay, sir, can you repeat the questions one more, please? I also, if you Sir, continue. 1 minute. First question is, what do you mean by society?
I share my screen. Yes, sir. This is a 6 marks question. Next, why study society? Sir, This is also of 6 marks. Huh. so we have objective Speak. type questions in final of this course, no? एक minute. No, your assignment questions for objective marks. No, sir. No, I'm sir, talking final about the final final. exam. Final exam objective marks. So please write this question. I also talked about this matter later. Okay. Sir, how many marks for knowledge and propaganda, sir? Yes, 6 marks. Okay, sir. Next. Good afternoon, sir. Hello. Hello. Yeah, good afternoon, sir. Sorry for being disturbing interruption in between, sir. Sir, good afternoon. This is Saritra over here. Sir, can you please repeat the questions with including the marks, sir, please? Okay. First question is, what do you mean by society? Marks, 6 marks. Next question, why study society? This is also 6 marks. Third question, short note on 3 stages of society. 10 marks. Next, write a note on types of society. $20 marks. And next, short note on knowledge and propaganda. 6 marks. Sir, हाँ sir, this question repeat in Hindi. हाँ समाज का संज्ञा प्रदान Yes, sir. समाज का संज्ञा दीजिए. Yes, sir. 6 marks. समाज का अध्ययन गुरुत्व व्याख्या Yes, sir. 6 marks. Yes, sir. समाज का जो धाप वो इंग्लिश में ही हो सकता है. 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी. Okay, sir. 3 पड़ाव भी बोल सकते हैं. फीचर हाँ 3 स्तर. ये 10 मार्क्स का है. Okay, sir. Next. समाज का श्रेणी विभाजन. समाज का श्रेणी. $20 marks. Okay, sir. और नॉलेज और जो प्रोपागेंडा उसका डिफरेंस. Excuse me, sir. Hello, sir. Are these questions we have to write for assignments?
to submit in December term and examinations. दिसंबर का जो असाइनमेंट है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये जो चैप्टर है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो दिया है हमने। Sir, sorry to interrupt you. Actually, I have a question. हाँ। सर मुझे 2020 की असाइनमेंट पेपर मिली थी ये BSHS की, ठीक है? तो मैंने उसको असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो विल इट वर्क फॉर सितंबर असाइनमेंट? ठीक है, वो जो असाइनमेंट तुम हमको व्हाट्सएप कर देंगे, हम वो आंसर हम तुमको कैसे लिखना है वो बोल देंगे, ठीक है? तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। हाँ, क्या क्वेश्चन तुम्हारा कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं सर, मैं बस पूछ रही थी कि वो चलेगा ना सितंबर के असाइनमेंट पे जो सबमिशन होने वाली है? हाँ हाँ हाँ, होगा। ओके सर, थैंक यू। Sir, can you give me your WhatsApp number, please? Give us your WhatsApp number so that we can contact. हाँ, 890 890 255 255 8525. 8525. Your name, sir? You join later, na? Yes, no, sir. I have joined from the beginning. I am already mentioned. My name is Dr. Aritra Ghosh. Okay. Okay. Thank you so much. Thanks. Next, discuss the unit 2, that is the evolution सर of अपना नंबर रिपीट करिए ना। सर इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। हाँ, तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या इसमें? नहीं, ये तो ग्लोबल क्लास है, इसका तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जो हमारा जो सेंटर का ग्रुप था वो है, मगर ग्लोबली कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ओके सर आप अपना नंबर रिपीट करिए ना प्लीज। 890 255 8525। ठीक है, हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्लास কোশ্চেন ছিল। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার অনেকে কানেক্ট করতে পারছে না, মানে লিংক শেয়ার করছি অনেকে কানেক্ট হতে পারছে না। আমি ঢোকাচ্ছি না, অ্যাডমিন যিনি আছেন তিনি নিচ্ছেন, তার ফলে উনি ঠিক মতোই সবাইকে ঢুকিয়ে নিচ্ছেন, প্রবলেম হওয়ার কথা নয়। সে প্রবলেম তো হচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করছে, প্রায় আধা ঘন্টা হয়ে গেল, এখনো মানে ঢুকছে না, মানে ঢুকতে পারছে না। আমি তো ক্লাস कोई हिंदी का सब्जेक्ट है तो प्लीज सर। हाँ सर अकेले मैं ही, मेरा ही सब्जेक्ट सिर्फ हिंदी में है या फिर सर और भी स्टूडेंट हिंदी में है सब्जेक्ट? सर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया ना वहाँ पर एक पिन कर दीजिए, जो हिंदी का जो मटेरियल चाहिए हम वहाँ पर दे देंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Sir, I have one question, sir. Sir, all these 5 questions for only unit 1 or for block 1? No, block 1, unit 1, only unit 1. Now I discuss the unit 2, evolution of mankind, and then the important question again. Unit 2, evolution of mankind. Here very much important, the tool making or tool using evolutionary perspective, how to evolution in our society from the old stone age to now the iron age. The first of all the old stone age, next the new stone age, next the bronze age, and the next the iron age. So in the old stone age or the Paleolithic period, being somewhat or somewhere between the specific years ago, human beings lived entirely on hunting, fishing, and gathering. The tools they fashioned from stone for this purpose were rudimentary in character. So these tools only enable them to live off nature and not to invest in it. In cultural evolution, this period is described as a stage of savagery
as depicted by famous anthropologist Morgan, a British anthropologist. Roughly chipped flints served a variety of purposes, from killing a prey to removing the skins to digging up roots and tubers. That is the mainly in old Stone Age, the hunting gathering society exist. And when the New Stone Age or Neolithic period, the Old Stone Age is a Paleolithic period and the New Stone Age is Neolithic period, began the 10,000 to 12,000 years ago. In this age, human beings were able to increase and thus control to some extent the supply of food. Supply of food, that is the New Stone Age. They did this by cultivating cereals and breeding animals. That is the also a matching in pastoral society and uh, uh, after the hunting gathering society. This period also provided us evidence for the existence of granaries or stone houses, which imply that food was often produced in excess of current requirements. The cultural characteristics of this period correspond roughly in that Morgan called barbaric age. It is during the period of Neolithic. That is the difference between the Old Stone Age and the New Stone Age. That is a Paleolithic period and Neolithic period. In Neolithic period, the Morgan called this age is a barbaric age. And the next, the Bronze Age, the next revolution in tool making came with the Bronze Age about 5,000 years ago. That is around 3000 BC. This period supported an urban population, skilled craftsmen, traders, priests, and writers. Now, the principal intervals were used for making tools and weapons. This period is described as the Bronze Age. But by this time, wine too was being used a source of energy primarily to aid water transportation. We find airboats being used from Polynesia to Egypt. The ruins of Mohenjo-daro and Harappa tells us of the application of the keen fire bricks, which mean a huge expenditure of fuel and the ability of the artisans to control high temperatures. In the Bronze Age, there are evidences to suggest that land was systematically reclaimed from swamp and desert, and record quantities of food stuffs were being produced. Artificial waterways also help to protect society against the vacancies of the weather. So in these branches very muchly improve in tool making and tool using process in evolutionary perspective. And the finally the Iron Age commenced around 1200 BC. Unlike copper and tin, which are quite rare and hence expensive, iron is one of the common elements founding the Earth's crust. So in this period of the Bronze Age technology, large empires had emerged in Greece, Asia, Minor, metropolitan Egypt, etc., to the invention of iron tools and weapons by the barbarian of Eurasia posed a major threat to these empires. Iron was used in India around 1000 BC. In the words of Gordon Child, cheap iron democratized agriculture and industry and warfare too. Any peasant could afford an iron axe to clear
fresh land for himself, and iron plowshares were with the break-up stony ground. In the past, the superior tools and weapons were rare and expensive. So the in this evolutionary perspective, different time period in different age, that is the from the old stone age to the iron age, society is evolved, and our tool making process also evolved in this four uh, especially these four age groups. And now tool making using of the march of culture, how to tool using relate to the cultural perspective. Here important point is the social institutions and interactions, how to social institutions, how to social interaction related to our culture and tool making or tool using. In the Neolithic, human beings were however still quite isolated, so their villages were generally self-sufficient, and the production of food was just about enough to support the existing population. So these villages were generally situated in different areas, and the deserts and the foothills or of mountains, or in the clearings in the dense forest. So all people the completely isolated in Neolithic period, and the here social institutions are and interactions much more important for tool making and tool using. Next is a cultural part of specialization and division of labor. The use of copper or bronze brought about another revolution. This age gave rise to specialists such as the craftsmen, metal creators, and they began to form guilds and clans which jealously guarded to the tricks of the trade. The coming of metal tools also made way for the development of a permanent ruling class. There was more interaction between different small settlements or villages. Women were also being displaced in the plow change, the technique of farming from plot cultivation to the large scale agriculture. While the woman generally used to plots, it was the man who plowed fields. That is the point. The here specialization and also the division of labor is much more important much important for the tool making and tool using. This is the difference between male and female, how to male engage with agriculture, female engage with agriculture, so that the cultural perspective, specialization and division of labor is very much important in this perspective. And next, the urban revolution. During the Bronze Age, an urban revolution also took place. Famous sociologist Sumner were two great urban civilization of this age. Towns become centers of a number of activities. Here, temples were constructed with the labor of hundreds of workers who had to supervise and directed. To do this, an architectural plan had to be drawn in advance. These outlines were laid out with the aid of strings. So this during this Bronze Age, urban revolution, urban settlement, urbanization process firstly make in this period. So next is a rise of great religions. In religious perspective, in Bronze Age showed further refinements in intellectual development. The Indus Valley civilization is a unique example of this. Further, we all know about the Some, excuse me, sir. Excuse me, sir. Some students still
They're trying to join, but they're not able to join, and they're sending message in a WhatsApp group. You can have a WhatsApp group once I have, you will look there, sir. There's so many students they are waiting. Is it a first year or second year classes going on, sir? We are a bit confused. Actually, I am a first year student from January 2020 sessions. BTS. Actually, a bit confused. Mm, The subject matters BSHF 101. That's it. subject BHSF 1101. That is the first year or second year also. Take. And we are BSHA, but we are doing a BTS. So the same things happening or what? Now BTS students also opt the BHSF 101. That is a bit confused, sir. Actually, I am a BTS Bachelor of Travel Tourism, but is it how? Okay. You opt the course BHSF 101. This is a compulsory course for BTS. Is it a compulsory? Exactly, sir. No idea, sir. Exactly, sir. No idea, sir. Just to go and let me find out once. Very much confusing. Bro, confused मत Even हो. the Subject matter करता है. hello. Subject ही same. क्या बोल रहे हैं? Whether you're studying Hello. science, BSc or any other course doesn't matter. The subject matters. It is PSH F101. That's it. Is it a part of BTS also, right? Yeah, that's right. Is it a part of BTS, right? So I'm looking for the see most of the our last classes also. Their ma'am was asking me about the page numbers and book name. These are all. Please, if you kindly mention it out here, that will be quite convenient. Well, you have selected your subjects. You should know what subjects you have. But I got the message means I thought I am in only. Exactly no idea about the entire subject. It is BSHF is out there. BSHF 101. Is it? It is there. BSHF. Right. BHSF 101. This is a yes course. Right, sir. So if you please kindly mention about the book also and page number, like earlier also ma'am was saying, it will be a bit convenient. I know to give it travel, but if you please later on also. Sir, একটা problem হচ্ছে আমি প্রেজেন্টেশন স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না। সেটা তো Yes, I can see the computer screen now. okay. Just a minute. এবার দেখা যাচ্ছে? BSHF, Foundation for in Humanity and Social Science. Exactly. হ্যাঁ স্যার Perspective. স্যার এখন দেখা যাচ্ছে। So last point is rise of great religions. Bronze Age
showed further refinements in intellectual development. The Indus Valley civilization is a unique example of this, and the growth of religious doctrines took various forms. In this perspective, tool making and tool using, the great philosophers mentioned that around this time, with this preaching and attained Confucius religious traditions of the Bronze Age preached the most compelling problem in Iron Age theology was to reconcile the individual with the society. Greece and India philosophy took a new turn and began to look at nature as comprising several constituent parts. This gave rise to the theory of atoms in Greece and or IGNOU in India. This is a perspective of culture, use the great religions perspective. And the evolution of human being as a thinking animal, here unique capabilities of thinking human being and species specific characteristics. The unique capabilities of thinking human beings, the process of evolution endowed human beings with several unique capabilities. Only they have the ability to use symbols, to think, to laugh, to question about secrets of life and death. Such abilities are not found among other animals. Anthropologists have been studying how these capabilities evolved in humans. The large cranial, that is brain capacity of humans, evolved slowly over a period of 15 to 20 years. Comparatively, the use of language evolved faster, but it was influenced by the growth of the size of the Please put your mic off, Ashok Please Pradhan. put your mic off, please. culture. Yet another distinctive feature of human beings comes from the ability of humans to conceptualize and to abstract through the use of symbols. It evolved slowly with the process of biological evolution of humans. But with the span of the past 20,000 years, not the biological but the cultural evolution of human come to dominate the mode of social changes. The use of language made more complex manifestations of culture possible and acquired institutionalized forms. But culture existed even before the human attained the ability to use language. The ability to communicate by using linguistic symbols liberated human beings from their physical and environmental dependence. It made it possible for them to have an objective and critical appraisal of natural and social phenomena. This ability is an essential component part the cultural endowment of human beings. That is the how to thinking human beings not only as an animal, that as a cultural part is very much important to this issue. Next is special specific characteristics.
There are, however, similarities between the human beings and animals, which psychologists like Skinner identified. Despite many common features that humans share with other animals, human beings are the unique. The uniqueness in their perennial quest for knowledge and their capacity to succeed in it. We get the proof of this the scientific discoveries and invention that humankind has made possible due to their cortical capacity and their adjustive behavior. So the brain released human beings from the dependence upon the physical environmental situation. They use their brain power to forgo tools to create objects to lessen their burden. So the species specific characteristics for human being is very much important, and this perspective, this socialization, however, is never complete. The socialization process go through the born to death, and human self embodies values and norms of society, learns in language and their ability to express cognitive and emotional reactions. And then the evolution of knowing individual, here mention growth of two cultures. The fast pace of growth of science has in its turn created problems of its relationship with values and the moral order of society. In the Western society, scholars have expressed disappointment about the increasing gap between the scientific and the moral order of society. Instead, integration science and moral values are showing increasing evidence of disassociation or distancing from each other. The segregation of science from values not only creates two cultures, but increasingly makes them run at across purposes or cross purposes. We notice it in the present day race for ornaments, ecological destruction through industrialization, control over human freedom, and in intervention or invention of weapons of mass annihilation like the atom bomb. Thus, for the survival and the very existence of human beings, it is necessary that the social and moral character of science is maintained. Form of knowledge in transition, here mention the magical form of knowledge and separation of science and religion. Magical form of knowledge, knowledge in the first instance grew through symbolic representation of nature, self, and of the fellow human beings. It played a central role in determining the human's relationship with both nature and culture. So, first, it evolved an magical and religious form. Magic, which for the primitive human being was equivalent to scientific knowledge, was based on principles of causality governed by two rules. That is, the first rule was that like produces like, and the second rule, once a part, always a part. Once a part, always a part. It was the belief that if something is done to a part of a person or his or her image, the ensuing results would devolve upon that person as such. So, this is the form of knowledge in transition, magical form of knowledge, as well as the separation of science and religion. Next is a division of knowledge into disciplines. Today, as disciplines under natural sciences, social sciences, and humanities are the result of the
division which took place during the period of emergence of university system. That is, this division is based largely on classification of reality on certain philosophical grounds. That is to say, each discipline, whether it is physics, chemistry, economics or sociology, assumed that it had for its study a separate subject matter. So division of knowledge into the disciplines evolute to human beings, and for the purpose of human or opportunities for human, uh, uh, disciplines of social sciences critically divisioned by various subject matter like economics, political science, sociology. Does this then mean that the individual is artificially divided among these disciplines? Is the economic man different from a political or sociological man? No. The individual, which is the subject matter, cannot be fragmented among the disciplines. They are merely different because they adopt different conceptual approaches to, and the study differ facets of the same subject matter, that is the individual. That is where there like hope for integration of knowledge, for comprehensive understanding of the subject matter through genuine interdisciplinary researches. That is, the sociology study the human beings for societal perspective, economics study the economical perspective, political science study the political perspective, but uh, unit of the study is a individual. So now interdisciplinary approaches is very much important to study the individual. Important questions for unit 2. First question, write a note on different evolutionary age. Next, what are the features of Bronze Age and Iron Age? Next, what are the main changes brought about in the production system during Bronze and Iron Age? Sir, can you repeat this question in Hindi? Okay. Next, short note on tool making or use and march of culture. And last question is critically discuss evolution of human being as a thinking animal and evolutionary of knowing individual. Sir, these questions are important for final exams too, right? Yes. Okay, sir. Thank you. Please repeat the questions slowly. You can take the screenshots. अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लिया तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना प्लीज. But it is in English version, JK. ओके, इतना तो इंग्लिश आता ही है. Okay, then I will share you. Okay. Put your number in the comment box. Okay. Please share with me also. Okay, put your number in the comment box. I will share you. I have shared my number. Please send me also. It's Okay. Aisha. Okay, Aisha, I will share with you. Thank you. Has the class ended?
Please do it. Share on our group. Okay. नेक्स्ट क्लास कब से है, किसी को पता है क्या? No, you will get a message from IGNOU University. Oh, okay. Hello. Yeah. Could you be kind enough to share in our group? Yeah, of course. Okay. Thank you. Where is Hey your दिव्या, group? And yeah, क्या चाहिए कैसे? मैंने सेंड कर दिया अपना नंबर. ओके ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ. ओके. ओके. आप लोग सारा अपना नंबर ये इसमें सेंड कर दो और एक ग्रुप बना लो, उसमें आप लोग बात कर सकते हो जो भी डाउट है. Yeah, obviously. I will also share my हाँ number. Please note down my number. Okay. हाँ, आप लोग एक ग्रुप बना लो, इससे मतलब कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, किसी को सबका डाउट क्लियर हो जाएगा. राइट? हाँ, it will help us. तो एक ग्रुप हम बनाते हैं जिसमें आयशा आप आ जाओ और अभी कौन था? मैं हूँ, जीके जो. जीके हो. ओके ठीक है. अच्छा, कौन कौन बीएससी से सेकंड ईयर? मैं हूँ. Excuse me. Hello. हेलो. ओके, जो बीएससी से है वो लोग अपना अलग ग्रुप बना लो, जो बीटीएस से है वो लोग अपना अलग ग्रुप बना लो. सो ऐसे हेल्प हो जाएगा. कंफ्यूजन हाँ, ये सही रहेगा आई थिंक. क्लास खत्म हो गया क्या? Group for क्लास खत्म हो गया. नहीं, क्लास खत्म हुआ कि नहीं पता नहीं. सर का हाँ, बैटरी ये लेकिन क्या होगा? सर नजर नहीं आ रहा है. सर का बैटरी, लैपटॉप का बैटरी खत्म हो गया होगा शायद. कोई group बना रहे हैं क्या के लिए? No. I think the class has been over. एक सेकंड, आप लोग एक जन बोलो, मतलब हम एक बीएससी काम का करते अलग हैं, ग्रुप हम बन जाएगा, बीएससी का बीटीएस का एक अलग बन जाएगा. अलग. सो किसी को डाउट नहीं होगा. राइट? ओके, दिव्या फ्रॉम बीएससी, मी फ्रॉम बीएससी. मैंने नंबर ले लिया है, तो मैं पिन कर दूंगा. जो बीएससी कमेंट डाल दो. ललित नंबर शेयर कर दिया है. जो कोई बना रहा है प्लीज मुझे ऐड कर ले. ब्रो, कोई बीएसडब्ल्यू से है क्या? हाँ, बीएससी से हूँ. हेलो. एक सेकंड, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर और बीएससी डाल के मेंशन कर दो, ताकि कोई को डाउट ना हो, सबको को समझ में आ जाए ये बीएससी के स्टूडेंट है, ये बीटीएस के स्टूडेंट है. राइट? डन. क्या डन? अनिर्बान, आप सारे बीएससी स्टूडेंट्स का ग्रुप बना रहे हो ना? वेल, पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो हाँ बना लेता है. अच्छा, एक एक करके. पहले बीएससी दो, फिर हाँ, पहले बीएससी का मेंशन कर लो पूरे एक साथ, उसके बाद बीटीएस का स्टार्ट कर देंगे. तो स्टार्ट नाउ. हाँ, आप बना लो, एक ग्रुप बना लो अनिर्बान, और हमें ऐड कर लो और पिंग करो. ओके. मैंने भी मेहनत करना पड़ेगा. मेरे से नहीं होने वाला. मैं करूँ क्या? मैं अपना कोई कॉल किया था. आप लोग जो बीटीएस के, जो बीएसडब्ल्यू के और जो बीएससी के, वो लोग अपना अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दो, और जिनको जिनको जरूरत है बीटीएस बीएससी या बीएसडब्ल्यू के, वो लोग आपको पिंग कर लेंगे, वो लोग आपको मेंशन कर देंगे. ठीक है? हाँ, पर ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना अंजलि. एक्चुअली आई थिंक किसी एक को ये ग्रुप बनाना चाहिए, जो ग्रुप मेंटर होंगे, आई मीन एडमिन होंगे, और उससे एक काम करो ना, आप ही बना लो ना. आपका जो सब्जेक्ट है आप अपना मेंशन कर दो कमेंट बॉक्स में, और वो लोग आपको पिंग कर लेंगे. जो बीएससी के होंगे वो आपको ही पिंग करेंगे, बीटीएस वगैरह और बीएसडब्ल्यू वगैरह और कोई आपको पिंग नहीं करेंगे. एक इंसान को पिंग करो. हाँ, ठीक है. ओके, मैं एक ग्रुप बना लेती हूँ बीटीएस का. तू पिंक कर. हाँ, मैं पिंग कर दूंगा दिव्या को. असाइनमेंट कब जमा करना है? असाइनमेंट आपको वेबसाइट पे आपको चेक कर लेना पड़ेगा. अनिर्बान. हाँ, बीएससी तो हाँ बीएससी. आप पिंक করে দাও ওটাকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমার একটা লোচা আছে বিএসসি সেকেন্ড ইয়ার ঠিকই, বাট ফার্স্ট ইয়ার এখনো ক্লিয়ার হয়নি. बीएससी सेकंड ईयर. হ্যাঁ, আমার সেকেন্ড ইয়ার. दिव्यांग दास,
एक्सक्यूज मी। यस। हाँ दिव्यांश, मुझे आप कर दो मैं कमेंट। हाँ हेलो आनंदिता इज अ बीटीएस मैं फर्स्ट ईयर नंबर और डाल दी हूँ, ठीक है। मैं बीएससी के लिए ग्रुप्स बना रही हूँ, ठीक है। तो आप इस ग्रुप में आनंदिता दे आर फ्रॉम हेलो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कोई क्लियर नहीं है। हेलो मैं अशोक बोल रहा हूँ। हेलो हाँ ये अरे कोई एक One जन by बोलो one. और उसके बाद में सब कोई पूछो। हाँ यस। हाँ बोलो। दिव्यांग कुछ बोल रहे थे आप? हाँ वही और कुछ नहीं। हाँ तो मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने अपना नंबर पुट कर दिया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और मैं ग्रुप बना रही हूँ बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें जितने सारे बीएससी स्टूडेंट्स होंगे ना, हम सारे एक साथ होंगे उस ग्रुप में। तो आप मुझे ठीक उस है नंबर पे पिंग कर लो, आई विल जॉइन इन माय ग्रुप। ओके ठीक है। Who is looking after BTS? दिव्या व्हाट्सएप नंबर कहाँ पे है? आप कमेंट कमेंट बॉक्स में आओ। बॉक्स में। हाँ बीएसडब्ल्यू का कौन बना रहा है ग्रुप? ओके ठीक है, डन, मिल गया। लिसन, बीटीएस का ग्रुप बन रहा है, सो मैं ग्रुप बना दे रही हूँ। आप लोग मेरे नंबर पे पिंग कर दो क्योंकि मैं ग्रुप बना दे रही हूँ, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। हेलो यस। या कोई बीएसडब्ल्यू का ग्रुप बना रहा है क्या? बीएसडब्ल्यू का। हे गाइस बीएसडब्ल्यू का तुम बना लो। बीएसडब्ल्यू में कौन कौन है मुझे पता नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में चेक करो, बीएसडब्ल्यू के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा हेलो हेलो हाँ बीएसडब्ल्यू में कौन कौन है? मैं हूँ आप बीएसडब्ल्यू लोग का, कमेंट जीके जुम। एक काम करो, आप लोग सारे कमेंट बॉक्स में आ जाओ। कमेंट बॉक्स में आके जो बीएसडब्ल्यू के स्टूडेंट्स है ना, उनका सारा का नंबर आप ले लो, या फिर अपना नंबर आप शेयर कर दो, ये लिख करके कि आप एक ग्रुप बना रहे हो, ठीक है। मैं बना देता हूँ बीएसडब्ल्यू Please का। anybody of BTS please? Hello? Anybody is taking care of BTS please? या अंजलि हाँ from हाँ BTS। बीटीएस का है, मैंने Who? नंबर Anandita दे। अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा। यहाँ पे ग्रुप बना रही दो हूँ, हेड्स है। मैं BSc नंबर भी सेंड कर दे रही हूँ कमेंट बॉक्स में। आप लोग मेरे को पिंग कर लो कि आप लोग बीटीएस के स्टूडेंट हो, राइट? आप कौन बोल रहे हैं आप मैडम? मैं अंजलि शर्मा बोल रही हूँ, मैडम मत बोलो। हे गाइस मैडम सॉरी अंजलि का आपका नंबर हमको दिखाई नहीं मिला इधर। मैं सेंड कर रही हूँ, वेट। अच्छा यू आर टेकिंग केयर ऑफ बीटीएस राइट? सबर करो सबर। अंजलि शर्मा ओके बीटीएस मैं ग्रुप बना रही हूँ। ओके थैंक्स। गाइस अपना नंबर सेंड करो, मैं बीएसडब्ल्यू का ग्रुप बना रहा हूँ। सब यार गैंग ये इग्नू का ना बहुत कंफ्यूजन है सच्ची। यार एक दूसरे को हेल्प करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही मुझे बैठे अभी तक रहेंगे। 300 खत्म हो जाएगा फिर भी कंफ्यूजन रहेगा। सोल्यूशन मिलने पे क्वेश्चन मिल जाएगा। सम गाइस हेल्प मी बिकॉज मैं तो जॉब में हूँ। अच्छा कमा रहा है और क्या चाहिए तेरे को? अरे कमाल कर रहा है यार, ऐसे सीनियर को बोल के आया हूँ कि मेरा क्लास चल रहा है। पता है मतलब स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है क्योंकि ना अंजलि यू आर ऑनलाइन। अंजलि यू आर ऑनलाइन। हाँ हाँ मैं ऑनलाइन हूँ, आप मेरे को पिंग कर ऑनलाइन लो फिर से। और सुनो मैडम ये आपका फर्स्ट ईयर ना? हाँ हाँ अच्छा आप थोड़ा हेल्प कर देना, आपको नंबर में पिंग कर रहा हूँ। भाई मेरे को खुद हेल्प चाहिए सबसे, ठीक है, मेरे आई को एम खुद लुकिंग नहीं फॉर पता बिकॉज़ क्या आई करना डू है। जॉब। अंजलि अच्छा भाई बोल दिया। पता है मतलब यहाँ पे ना सबको कंफ्यूजन है, क्यों बोलो तो मतलब बीएससी का एक सब्जेक्ट बीएसएचएफ और बीटीएस में भी यही सब्जेक्ट है, तो ना सबको कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब ये बीटीएस का या फिर बीएसएफ का या फिर बीएससी का, व्हाटएवर। It doesn't matter. BSF चीफ है मतलब। अरे ये हम लोग को पता है, ये डजंट मैटर। अरे ये हम लोग को पता है कि डजंट मैटर, बट ठीक है ना, बहुत कोई को पता नहीं है और वो लोग ना कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि मतलब ये बीएससी का या फिर बीटीएस का है। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ना डिवाइड हो जाते हैं, बट नॉट ईयर वाइज और नॉट मेजर सब्जेक्ट वाइज।
ये ना डिवाइड हो रहे हैं बस ऐसे ही, जो जो सब्जेक्ट ले रहा है। आई मीन कोई ऑप्शंस आ रहे हैं जब हम एडमिशन दे रहे हैं ना, तो कोई ऑप्शंस आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक सब्जेक्ट एक कंपलसरी में रखो, तो ये किसी के भी मुझे तो पल्ले पड़ बस जाता है। किसी तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है बस, और कुछ नहीं। हेलो सारे हो रहा यही नहीं सोच है। कर बैठे हुए हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो क्या रे? हेलो, आप BSW का ग्रुप बनाया है क्या? हाँ बना लिया, ज्वाइन कर जा, देख लिंक भेजा है। अभी दिव्या सिंह को मैसेज नहीं कर पा रही है, उनका नंबर व्हाट्सएप। ओ सॉरी सॉरी ये सॉरी, सर का देखो गायब हो गया भाई। एक सेकेंड। अरे सर का लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया। पता नहीं, कोई इन्फो भी तो नहीं मिल रहा। बैटरी लो आ रहा था। वो तो है, देखते हैं। बस हम लोग ही बचे इस जन। अरे सर को भी ना अच्छे से एक्सप्लेन करने नहीं आता है, ठीक है? नहीं कर पाता। सर यहाँ भी कोई ठीक से भी एक्सप्लेन नहीं प्रोफेसर कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं। और वो लोग पूरा इन्फॉर्मेशन देते भी नहीं है, सोचते हैं कि हम लोग खुद से ही मतलब फाइंड आउट करें। सब और ऊपर से मेरे चला। ख्याल में सारे इतने प्रो हो भी गए हैं कि शायद हम सब खुद से कर सकते हैं। हाँ, बार बार एक ही साल में अटक के हो जाएगा। नहीं, हम लोग को खुद से मतलब फाइंड आउट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वेबसाइट को भी सोचना चाहिए ना, सही से ढंग से इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। हमने असाइनमेंट्स ये सबमिट कर दिया ऑनलाइन, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं मिला हम लोग को, ना ईमेल आया ना कुछ आया। तो हम लोग कुछ नहीं किया। कंफर्म होंगे कि मतलब असाइनमेंट्स हमारा अप्रूव हुआ या फिर गया या फिर ओके, सबमिट हुआ, कुछ असाइनमेंट्स नहीं कब पता तक चला। जमा है? एक कंफ्यूजन है। अच्छा, मेरा सवाल है, देखो मैंने एनरोल किया था 2019 में, पकड़ लो, ठीक है? कोई असाइनमेंट्स नहीं दिया, तो जब मुझे 2020 में असाइनमेंट्स देने पड़ेंगे तो क्वेश्चंस किसके रहेंगे, मतलब उसी साल के ना? हाँ, तो तुम अभी तक असाइनमेंट्स नहीं बनाए तो तुम्हें पहले का असाइनमेंट सबमिट करने ही पड़ेंगे अगर तुम्हें मार्क्स चाहिए तो। हाँ राइट, बट क्वेश्चंस कौन से साल के रहेंगे? करंट साल के, मतलब क्वेश्चंस वही साल करेंगे जो जब तुम ज्वाइन किए प्रेजेंट हो, ईयर का। जो मंथ का असाइनमेंट तुम्हें मिला है वही क्वेश्चन तुम्हें बनाना पड़ेगा, वही असाइनमेंट तुम्हें बनाना पड़ेगा और तुम्हें सबमिट अरे मान ले करना वो पड़ेगा, स्किप लेकिन कर दिया तुम्हें ना मैंने, जाके वहां मतलब पे पूछना पड़ेगा। नहीं, वो टर्म स्किप कर दिया मैंने। जुलाई का सेशन था, मैंने स्किप कर दिया, असाइनमेंट्स नहीं दिया, जो कुछ दे दिया। अब जब दिव्या आपका ये नंबर भी नहीं मिल रहा। अब जब मुझे दिसंबर में देना है असाइनमेंट्स, तो क्वेश्चंस तो फिर से आते हैं ना नए। आते हैं, बट वो तुम्हें तो वहां वही पे जाके कंफ्यूजन है, पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि तुमने एग्जैक्टली बहुत असाइनमेंट बड़ा सबमिट नहीं कंफ्यूजन है। किया है ना, वही तुम्हें जाके पूछना पड़ेगा। या फिर तुम सर से पूछ लो जो सर तुम्हें नंबर दिए हैं। करूंगा, उसका नहीं मानो, सब पीपीटी मांगूंगा, पीपीटी दे मेरे को। अच्छा अंजलि, मुझे एक गाइस, कंफ्यूजन ये बताओ। कौन सा ग्रुप है जून 2020? क्या पता, कोई लिंक ये बार बार स्पैम BSW कर का रहा है। हेलो, कोई मुझसे कुछ क्या पूछ रहा क्या था। ये जो नया नंबर है ये भी व्हाट्सएप पे नहीं मिल रहा है। आ गया तुम्हारा मैसेज आयशा, मुझे मिल गया है। अच्छा, तुमने पिंक किया ना? नहीं मैंने पिंग नहीं किया किसी को। अभी तक नहीं किया। हेलो गाइस, DM किया? ये हाय अच्छा आयशा, दिव्या, दिस आयशा। इज मी। मेरा भी नाम आयशा ही है। ओके सॉरी। मैं आयशा मलिक हूँ। अच्छा हाँ, और आयशा मैं आयशा परवेज हूँ। मलिक, मैंने आयशा परवेज को मैसेज किया है अभी। हेलो आयशा। ओके गाइस, बाय बाय। बाय, टेक केयर। अंजलि कहाँ गई? आई एम गोइंग टू माय जॉब। दिव्या, आप मुझे बुला रही हो? हाँ अंजलि, मैं आप ही को बुला रही थी। हाँ, अंजलि, बोलो बोलो। ये जो हमारा ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक दैट DHSS, ये ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट है, तो मुझे कंफ्यूजन इस बात की है कि इसके मार्क्स क्या ऐड अप होते हैं या फिर मतलब मान लीजिए कि जैसे हमने 12 क्लास की स्टडी की हुई है, तो उसमें अगर हमारा मेन स्ट्रीम जो होता है एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ओके? अगर मेन स्ट्रीम से किसी का कम आ जाता है या फिर हम कंपार्ट हो जाते हैं तो वो नंबर हमारा ऐड अप हो जाता है। तो जस्ट लाइक दैट ये भी उसी तरह का काम करेगा ना?
इसके लिए तो मतलब मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि मतलब इसका क्या करना है क्या नहीं, बट मैं इतना बोल सकती हूँ, मान लीजिए अगर आपका कोई सब्जेक्ट में मार्क्स कम आया है, ठीक है, तो हाँ हाँ। आपको आप चाहती हैं कि मतलब उसमें मेरा अच्छा मार्क्स है, तो आप वो दोबारा फॉर्म फिलअप करके आप उसमें अच्छा मार्क्स एग्जाम देके अच्छा मार्क्स ले सकती हैं, ऐसा होता है। फायदा ही फायदा। यही तो कंफ्यूजन है यार, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं और ना अभी तक ये इस चीज कंफ्यूजन है कि ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट और कंपलसरी सब्जेक्ट ये लोग मेंशन नहीं करते हैं, यही स्टूडेंट्स को मतलब इसका आई जस्ट कंफ्यूजन हेलो, है। दिस इज आयशा। दिव्या, हाँ आयशा हेलो। बताइए। हाँ, आप बीएससी से हो ना? हाँ मैं बीएससी सेकेंड ईयर से हूँ, मैंने तो पिंक एज किया है। फार एज आई नो, अभी 2 बजे एक और क्लास है, तो विल यू बी देयर? एलएसई व्हाट? में आप हो? 2 बजे? एलएससी हाँ, क्या दो। है? एलएससी का पूरा एलएसई कोड बताना। 05। कोई हाँ मुझे तो कोई लिंक नहीं आया है, ये सब्जेक्ट तो मेरा भी है। अच्छा, तो आपको मैं आयशा, एक ग्रुप। हाँ। मैं आयशा आयशा मलिक। मल्लिक, आयशा मल्लिक। सुनो नो सुनो नो मेरी बात नो, सुनो आप। दिस इज नॉट आयशा मलिक, दिस इज आयशा परवेज। नहीं, वो नो मेरी मैं बात कर। मल्लिक को बोल रही हूँ। आयशा सुनो, आप मुझे अपना नंबर सेंड करो, ठीक है? आप ऐसे ही बोलो। मैंने आपको अभी आयशा मलिक बोल रही हूँ बोल के मैंने आपको सेंड किया है मैसेज। हेलो हेलो। आई जस्ट टेक्स्टेड यू ऑन व्हाट्सएप, प्लीज चेक। आपने व्हाट्सएप किया मुझे? हाँ, मैंने आपको व्हाट्सएप किया लेकिन डबल टिक नहीं आया। आ जाएगा आ जाएगा, वो थोड़ा नेटवर्क इशू है। हाँ हाँ हाँ, आई हैव गॉट योर मैसेज। हाँ, मैं भी सेकेंड ईयर की हूँ और मेरा भी एलएससी 5 है, लेकिन कोई लिंक या फिर मैसेज तो नहीं आया इग्नू की तरफ से। हाँ मेरे एक्चुअली मेरे पास भी नहीं आया। एक्चुअली वेट, जस्ट लिसन टू मी वंस। हेलो हाँ या जी। सी, संजय चट्टोपाध्याय इज द मेंटर। एडमिन ऑफ दिस ग्रुप, जिसने ये ग्रुप बनाया था एलएससी 5 का, आई सपोज 2-3 days अगो। तो उन्होंने वही सर हैं, उन्होंने ही मैसेज करा था कि आज सैटरडे 18 जुलाई को 2 से 4 बजे तक एलएससी 5 की क्लास होगी। अच्छा लिसन तो आयशा परवेज, वही सर जी, सीएचई 1 का ग्रुप बनाया है केमिस्ट्री का, लेकिन मुझे एलएससी 5 में ऐड नहीं किया, तो क्या प्लीज आप उसको बता सकते हो मुझे ऐड डू कर। वन थिंग, एलएस अच्छा रुक जा, एलएससी 5 के जो भी है वो आयशा को पिंग कर अपना नाम और एनरोल देख के वो ग्रुप में फॉरवर्ड करेगी, वो सर ऐड कर लेंगे। तो फिर आयशा हाँ परवेज ठीक है, को नाम भेजूं? ठीक है, आई विल डू दैट। क्या वेट आयशा? ग्रुप बनाया है केमिस्ट्री का, कल कल नहीं सॉरी 2-3 दिन पहले। फिर भी तो हमें बैठे बैठे इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है, बट प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट? अच्छा ये सुन रहे, सब कॉलेज में फ्री में पास। फ्री में पास कर दे मतलब? हाँ तो एग्जाम ऐसा बिना दिए कुछ तो सबको नहीं निकाल है, दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्यों दिल टूट रहा है मेरा, छोड़ दे। प्राइवेट कॉलेज में ना इसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा जाकर बार बार कॉलेज में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, नोट्स कलेक्ट करना, हम हमें तो बैठे बैठे मिल जा रहा है। यार इतने सारे ग्रुप कोई कैसे बना सकता है यार? मैं कहाँ जाऊंगी? एलएससी 5 के लिए अलग से ग्रुप है, एलएससी 2 के लिए अलग से ग्रुप है, यार इतने सारे ग्रुप। अच्छा मैं सुनी हूँ कि मतलब ये सितंबर में एग्जाम है। सितंबर में लास्ट ईयर का एग्जाम है शायद, मैंने यही सुना था। लेकिन शायद पोस्टपोन हो सकता है। किसके पास है? कपड़े को नहीं देखा, कान को दौड़ा। यूजीसी भाई अलग किसी के भी बातें बोल एग्जाम रहे तो मेरे हैं, एग्जाम्स ना हो। एमएचआरडी अलग बातें बोल रहे हैं, तो अभी वो लोग खुद में एकदम श्योर नहीं है, तो हम लोग भी तो चिल मारेंगे। एग्जैक्टली, और कर ही क्या सकते हैं, इनका ये तो था, इसको बोलती
लेकिन फिर भी टेंशन होगा, एग्जाम होगा ना तो मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन एग्जाम होगा तो इतना इन्फॉर्म कर दिया है कि एमसीक्यूज होगा और ओएमआर शीट में होगा। हाँ यार वही तो। और ये लोग प्रमोट भी करेंगे तो एक कंडीशन पे ये प्रमोट करेंगे, वो कंडीशन होगा कि या तो एमसीक्यू ये मॉक टेस्ट वगैरह ये दो नाश्ता कराया पाइप से और दवाई खिला दी, तो पता ही नहीं पता। हाँ तभी तो दवाई सबको नंबर दे दी हूँ मैं और कॉल पे कॉल कर रहे हैं ये लोग। मतलब क्या बोलूं, मेरे को पागल कर देंगे ये लोग। मैसेज करना था इन लोगों ने और ये लोग कॉल कर रहे हैं। नहीं थोड़ा सा तुमने कल रात को बोला ना थोड़ा सा करो, नहीं खाना नहीं। हेलो हेलो, बोल रहा हूँ मेरा माइक खराब हो गया हेडफोन का, तो मैं एग्जिट कर रहा है। ग्रुप में मिल रहा है। आई एम पिंगिंग यू दिव्या। अच्छा मुझे पिक करना है एक बार मैसेज, ओके? हाँ मैं पिंग कर दे रहा हूँ अभी। हाँ एक्सक्यूज मी, चलो बाय। बीटीएस का ग्रुप क्या बन गया? मिस अंजलि, क्या आपने बना दिया है क्या? मैंने बना दिया तो आप पिंग कर सकते हो। या I've already done it. ठीक है, मैं आपको ऐड कर लेती हूँ। Okay, thank you. आप प्रभु देव घाटक, आई Yeah, थिंक yeah, मैं yeah. इनको That's me. जानती आयशा, हूँ। आयशा, Yeah. मलिक Sorry, who's this? हाँ मलिक, आयशा मलिक जी। आई हैव आप एडेड यू प्रभु इन द देव हो ना, ग्रुप। मैं आई आपको हैव आस्क्ड जानती सर। हूँ। कोई एक बात करो प्लीज। मैं बोल रही हूँ कि मैंने आपको ऐड करवा दिया है, हो सकता है थोड़ी देर में आपको सर मैसेज वो कर दें। ओके 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 ठीक है। अच्छा ओके। प्रभु मुझे भी देव ऐड कर घाटक दो हो ना यार, मुझे आप? भी ऐड कर दो। फ्रैंकफिन से हो? पहले एक मतलब ऐड हो जाए ना। Yeah, yeah. फ्रैंकलिन इज नॉट देयर ऑनलाइन राइट नाउ। हाँ वो जैसे ठीक ही है, मैं समझ ऑनलाइन, गई। एक्चुअली अभी 2 बजने वाले हैं ना, तो आई नीड टू ब्रिंग माय बुक्स एंड एवरीथिंग, ठीक नीड है, टू मैं गेट आपको ऐड प्रिपेयर्ड कर फॉर द लेती हूँ। क्लास। मैंने एक को ऐड How कर do you दिया know है। that I'm from Franklin? आयशा मुझे भी ऐड कर लो प्लीज। बस मुझे कौन पता है है। आप? दिव्या? हाँ मैं दिव्या। Are you from Franklin? ओके, मैं एडिंग यू, वेट क्या? जस्ट मिनट। अच्छा, Which बाय बाय batch? ऑल ऑफ यू। अम, वो प्रतिमा है ना, Yeah, yeah, yeah. मैं उसकी फ्रेंड हूँ। Okay. Yeah, yeah. Okay. Nice to meet you. कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। यहाँ पे कैसी बातें चल। नहीं ऐसी कुछ बात नहीं, मतलब मैं इनको जानती हूँ ना, दैट्स व्हाई मैंने इनसे पूछ लिया। ओह नहीं यार यू मतलब गाइस इससे आर पहले भी वेरी मैंने लकी क्लास यार। ज्वाइन की थी ना, तो मैं ना मतलब यहाँ देख रही थी किसका किसका नाम, तो मैंने एक नाम देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे जानती हूँ। Oh. दैट्स व्हाई। क्या अच्छी इत्तेफाक है, बताओ। आप कौन से ब्रांच से हो फ्रैंकलिन के? कैमक स्ट्रीट। Kamak Street one. Yeah. ओ आप दोनों Kamak कैमिक Street. स्ट्रीट से हो? Yeah, हाँ yeah, yeah. वाह गुड। बाकी सारे मिल नहीं रहे। शॉर्टकट में ये ग्रुप नहीं बन सकता क्या? आई मीन कोई भी इंडिविजुअल्स को क्लिक करके एक बार में ग्रुप बनाना, ये क्या मुझे ढूंढना पड़ रहा है ये सारे नंबर्स वगैरह। इतना ही मिल गया वही Okay. काफी है। जल्दी अगर ग्रुप बन जाएगा तो इट्स फाइन, आप मुझे पिंग कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। थैंक यू। मैंने इससे पहले भी बहुत सारा क्लास मिस किया है, बट आज मुझे रिग्रेट हो रहा है क्योंकि मुझे आज क्लास अटेंड करके मुझे इतना सारा क्वेश्चंस मिल गया। क्लासेस कैसे मिस हुए? अरे मेरे को ना मतलब ईमेल आता अंजलि। है और नॉर्मल मैसेजेस आते हैं, सो हाँ मुझे मतलब अब तक सिर्फ 2 ईमेल्स आए थे, तो मैंने तो आई थिंक अपने अकॉर्डिंग कोई क्लास नहीं मिस किया है, राइट? मैंने मिस कर दिया क्योंकि ना मैं ना भूल जाती हूँ, और ऐसा है कि मतलब मुझे याद रहता है कि 12 बजे 2 बजे क्लास है और फिर मैं भूल जाती हूँ क्योंकि घर के कामों में मैं बिजी हो जाती हूँ, दैट्स व्हाई। या एग्जैक्टली अभी ऐसा टाइम भी चल रहा है कि हम इतने लेजी हो गए हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता है हमें।
और भी मुझे एक्चुअली पहले आपका ऐसा क्लास लगता था होने कि वाली थी। मतलब क्लास होगा तो सिर्फ लेक्चर देंगे, तो मतलब क्या क्या होगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। फिर अभी पता चला कि इम्पोर्टेंट नोट्स क्वेश्चंस मिल रहे हैं। एग्जैक्टली यार। बीएससी में क्लासेस होता है क्या? हेलो हेलो। आपको बीएससी का क्लासेस करना है? ऑनलाइन जैसे आप, हाँ तो आप दिव्या से बात कर लो। आप नंबर अपना, सॉरी मेरा नंबर मैसेज में इनबॉक्स में दिया हुआ है, सॉरी कमेंट बॉक्स में। आप जा करके वहां से नंबर मेरा उठाइए और पिंग कीजिए, ओके। वहां से तो हम आपको एक मैसेज किए, देखिएगा आप शायद। आपका नाम क्या है, सॉरी? अनिल अनिल सिन्हा। क्या सिन्हा? अनिल सिन्हा। नहीं, मुझे तो आपका मैसेज नहीं मिला। आप अगेन मैसेज कर सकते हो अभी क्या? अब 2 बजने वाले हैं, मुझे भी कोई लिंक नहीं आया, मैं कैसे करूं पार्टिसिपेट? मैं अभी यहाँ पर आप कैसे लिखूं, कौन मुझे तो से समझ स्ट्रीम में से भी हो नहीं आ आप? रहा। मैं पिन कैसे करूं, मुझे इसे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे क्या करूं। लेकिन मैंने आपको मैसेज तो एक करा है काम करो, व्हाट्सएप। आप अपना नंबर मुझे बोलो। 9547 एक सेकेंड 95 47 47 204 204 703 7। 03। ओके, नाम क्या बताया आपने? मनील सिन्हा। मनील। ओके, आप बीएससी से हो ना? ठीक है, मैं कर रही हूँ। हे भगवान, इतना सारा मैसेजेस आ गया है, मैं किसको किसको कैसे ऐड करूं? ओह गॉड। इतने सारे नाम है। और व्हाट्सएप में ऐसा है कि पहले नंबर सेव करो नाम से, उसके बाद ऐड करो। एग्जैक्टली यार, थोड़ा तो कन्वीनियंट होना चाहिए था व्हाट्सएप को। हाँ। आज भी लग रहा है 90s में ही जी रहा है। कन्वीनियंट ही तो है, नहीं तो फिर अननोन नंबर्स का कॉल आने लगेगा। अच्छा जी। फेसबुक में कैसे अननोन नंबर्स का कॉल्स आता है, लोग रिक्वेस्ट वहाँ पर सेंड करते रिसीव करते हैं, फिर अंतर क्या रह जाता है व्हाट्सएप और फेसबुक में। अच्छा, अच्छा आप ही मनील हो ना? हाँ हाँ। ओके। यहाँ से केमिस्ट्री फिजिक्स का क्लासेस वगैरह होता है क्या, कुछ ऐसा कुछ जानकारी है? किसका? केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ये सब क्लासेस होता है क्या, कुछ आपका जानकारी है? केमिस्ट्री है? नहीं, मेरा मैथ्स है। ये तो मुझे भी जानकारी नहीं है फिर। तो ये जो ग्रुप बना रहे हैं, तो आखिर किस पर्पज से ग्रुप बना रहे हैं, मतलब इसमें क्या? बीएससी के स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री का जो ग्रुप भी है, केमिस्ट्री का ग्रुप है। आप सुनो मनील, आपको अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स के लिए होंगे या नहीं होंगे, आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो। एनीवन कैन हेल्प यू, ओके। कोई भी आपको हेल्प कर सकता है। यहाँ नहीं तो बहुत अदर सारे क्लासेस है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उस रिगार्डिंग में तो हाँ, क्लासेस होने मेरे का चांस सब्जेक्ट है। नहीं है, बट मेरी सब्जेक्ट नहीं है ये फिजिक्स केमिस्ट्री, बट इट डजंट मीन ना किसी की भी सब्जेक्ट नहीं होगी। इस ग्रुप में किसी ना किसी की जरूर होगी, ओके। इस ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। यू कैन आस्क फ्रॉम समवन, ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलिए लीव करते हैं। मैंने ऐड कर लिया है मनीला आपको, ओके। हाँ, मैं देखा उसमें। बीएससी इग्नू ना? क्या? ठीक।
इसमें सारे लोग साइंस के है ना? हाँ हाँ इसमें सारे लोग तो साइंस के BSc के है ना? ठीक। एक तरह से अच्छा हुआ, सबको अपना अपना ग्रुप मिल गया। सर तो इतना बताने से रहे, हम ही लोग अपना ग्रुप बना के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर हाँ यार, लेते। हम ही लोग हेल्प कर सकते हैं ना एक दूसरे की। सर क्या हेल्प हाँ करेंगे? सर की तो मैं देख ही पा रही हूँ, क्या ही वो हेल्प करेंगे। वो तो सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। और कोई भी इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन देता नहीं है, पता है। एग्जैक्टली सही कहा तुमने। चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या फिर इग्नू हो, कोई भी पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देता है, हम ही लोग को मेहनत करना पड़ता है। बट एग्जाम्स लेते वक्त तो सारे कोई आगे आ जाते हैं फिर। एग्जाम्स में भी तो मदद कर देनी चाहिए हमारी, ये कह के कि नहीं मैंने तो पढ़ाया ही कहा था, मैं तो बस ऐਵੇਂ ही कंडक्ट करता था क्लासेस, मुझे क्या ही पढ़ा था। यार मैंने वो संजय चक्रवर्ती को मैसेज किया कि कुछ लिंक्डइन भेजिए सर, एलएससी 5 का क्लास का। उन्होंने मैसेज देख के कोई रिप्लाई नहीं किया। शिट यार, ऐसा ही होता है पता है। पिछले क्लास में मैंने भी एक सर का नंबर लिया था, उनको मैंने मैसेज किया था, उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया। मैं ना उनको बोल रही थी कि सर अगर आप कोई ट्यूशन वगैरह लेते हो तो आप ऑनलाइन लो, मैं तो ज्वाइन कर सकती हूँ आपकी ट्यूशन। पर उन्होंने बोला कि विच स्ट्रीम फ्रॉम यू आर एंड वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है मुझे कि ओ, उसके बाद उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया मुझे। इनका तो अलग ही स्वैग चलता है। तो कैसे करूँ ज्वाइन फिर? 1:55 तो बजने वाले हैं। 2 बजे से क्लास है ना? हाँ वो परवेज जो थी उन्होंने तो बोला। हाँ आयशा परवेज ने, पर उसने ऐड नहीं किया मुझे, और ना ही मुझे किसी भी तरह का मैसेज आया है। बेस इग्नू का तो ग्रुप तो बन चुका है। हाँ हाँ बट आपको भी तो उसने add कोई किया मैसेज है। नहीं किया। शिट, कितने सारे पीपल आ गए हैं। हम ही लोग को मेहनत करना पड़ेगा, सबको ऐड करके। सब वो आराम से बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली मेरा सर घूम रहा है। कोई नहीं, मेहनत कर लेते हैं, हम ही लोग को प्रॉफिट होगा। हाँ एग्जैक्टली, किसी भी तरह का कुछ भी कंडक्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा। हम लोग को फिर भी मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है वेबसाइट में, मतलब सर्च करते करते। बट बहुत कोई होता है कि जिनको पता नहीं रहता है कुछ। हाँ एग्जैक्टली यार, मुझे तो स्टडी मटेरियल्स वगैरह भी, मैं हमेशा ये सब सर्च करते रहती हूँ ना, तो मुझे ये सब चीज कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो स्टडी मटेरियल वगैरह मिल गया, मैंने असाइनमेंट भी स्टार्ट कर दिया। पर कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इस वजह से मैं सोच रही हूँ चलो ठीक है, मेरे तरफ से भी कुछ हेल्प हो जाए तो इनका भी सही हो जाएगा ना। तुम्हारा स्टडी मटेरियल मतलब स्टडी ये बाय मटेरियल पोस्ट नहीं आया? मतलब जैसे हार्ड बुक्स हमारे आते हैं ना, हार्ड कॉपीज जो आते हैं हमारे यहाँ हाँ हाँ। बाई पोस्ट। अब वो पोस्ट तो आया नहीं, पैंडेमिक करके। अब उस वजह से एक और रौला हो गया
कि वो तो आएगा नहीं, अब ऑनलाइन ही आप लोगों को ये करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा उसे। तो मैं किसी वेबसाइट से, कोई यूट्यूब चैनल एक्चुअली मैं देख रही थी, तो उनके वेबसाइट पे ना अपलोडेड था। तो उसके बाद ना वो गलती से मुझसे डिलीट हो गया, तो फिर मैंने एक बार ही सर्च करा और मुझे मिल भी गया। मैं बोली चलो ठीक है, चंगा है, फिर इसी से अब हम फोन करेंगे और क्या। सही है। मेरे को यार मैंने एलएससी तो बोल रहे हैं ये। ओह हाँ हाँ हाँ, आ गया। हाँ बताओ अंजलि, क्या बोल रही थी? मैं तो ज्वाइन की थी जनवरी या फेब में, मतलब यही 2020 में। मेरा बाईपोस्ट आ गया था, थैंक गॉड पैंडेमिक से पहले आ गया। हाँ यार, जिनका एडमिशन उस मंथ में था ना, उनको बाई पोस्ट उनके हार्ड कॉपीज मिल गए, बट हमें ही नहीं मिल पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। मेरी बस एक कॉपी सेंड हुई थी, यही शायद इसी की पीएचएसएफ की सेंड हुई है मेरे पास। सही है। अच्छा अंजलि, वैसे मेरा नंबर मतलब क्या है तुम्हारे पास? मेरा नंबर हाँ, नहीं मेरा नंबर मैं गया समझी है क्या? नहीं, दोबारा बोलो। मेरा नंबर तुम्हारे पास गया है? हाँ मेरे पास गया है। मैं ओके वैसे भी ठीक है। तुम्हें पिंग करती। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली कर देना मुझे पिन। ओके हाँ यार, सक्सेसफुली आई वर एडेड। मैंने सबको ऐड कर लिया। हाँ मैंने भी ऐड कर लिया। यार बच गई। वैसे क्या है ना, मतलब अच्छा तुम्हारा फर्स्ट ईयर है ना? नहीं, मेरा ये सेकंड ईयर है। अच्छा, हम लोग अच्छा, ने मैं एक पूछ रही थी असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। फर्स्ट ईयर का। हाँ ऑनलाइन। फर्स्ट ईयर का तो मेरा भी ऑनलाइन किया था। फर्स्ट ईयर का पता है मेरी एडमिशन कब की थी? मेरी एडमिशन थी 2017 की। तो मैंने ना असाइनमेंट कब का ही जमा कर दिया था, बट मेरे एग्जाम्स पहला जो साल गया ना 2017 का, उसमें हाँ मैंने हाँ एग्जाम हाँ। दिए नहीं। 2018 में मैंने दिए, तो फैमिली प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा थी मेरी। तो उस वजह से ना मैं 2 सब्जेक्ट्स के मैंने दिए थे, और 4 सब्जेक्ट्स मुझे देने थे दिसंबर में। तो ना वो मैं कंपार्ट हो गई थी। उसके बाद अचानक से ये अभी हुआ कंडीशन, तो अभी बोला जा रहा है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा एंड ऑल, ऐसा करके। मैं सोची कि शायद प्रमोट हो जाए हम। अगर नहीं भी होंगे तो मैं बैठूंगी जरूर एग्जाम देने के लिए। हमें बैठना ही होगा अगर नहीं प्रमोट होंगे तो, है कि ऐसे नहीं? कंपार्ट लग गया तो क्या हो गया, मतलब तुम दोबारा फॉर्म फिलअप करके दे सकती हो, हाँ हाँ मतलब हाँ, अगर कर मान लो सकते हैं। तुम्हारा। जो जिस जिस मेरे पेपर में कॉम्पार्ट हुए थे ना, वो इस साल मैंने हाँ भर भी दिया था, और एग्जामिनेशन फीस सारे मैंने सब्जेक्ट्स के सबमिट कर दिए थे, ठीक है। अप्रैल मंथ में ही मैंने कर दिया था, बट अभी अचानक से ये न्यूज आने लगा कि नहीं होगा, एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे, और आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी प्रमोटेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एज, बट नॉट फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि उनको बोला जा रहा है कि हम आपको बैठे बिठा के डिग्री। हाँ ये बात तो है, लेकिन अगर मान लो ये लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट कर देंगे, तो भाई क्यों ऐसे दिखा रहे हो, कर दो ना प्रमोट। सबके अंदर यही है कि अरे एग्जैक्टली, प्रमोट अभी कर तक तो देंगे प्रमोट उसके कर देंगे। चेयरमैन सामने से आ भी नहीं रहे हैं कि हम प्रमोट हैं, या फिर आप बोलो कि आपकी क्या डिसीजन है। ठीक है, ये तो बस न्यूज़ेज आ रही हैं हमारे पास यूजीसी की तरफ और से। हम लोग को बट डाउट में रख रहे हैं, मतलब हम लोग को क्यूरियोसिटी भी हो रहा है जानने का, और ये लोग ऐसे भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली और पता है, मेरे यहाँ पे एक आंटी रहती हैं, वो भी बोल रही थी, वो भी शायद इग्नू से कर रही थी, ठीक है। तो वो कह रही थी कि नहीं नहीं, प्रमोट कर दिया जाएगा, तुम टेंशन मत लो, शायद 1-2 मंथ में आप लोग का रिजल्ट भी आ जाए। तो मैं बोली चल ठीक है, वेट ही कर लेते हैं, अभी तो वेट छोड़ के हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ राइट। तो अभी चलो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और अचानक से सेकंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो गई इसमें चढ़ा, तो मैं सोची कि चलो ठीक है, लग तो रहा है, ऐसी वाइब्स आ रही है मुझे कि हम प्रमोट हो चुके हैं। अब गॉड नोस कि हाँ आगे क्या जैसे टेन होने वाला ट्वेल्थ को कर दिया वैसे ही। है। हाँ एग्जैक्टली, सारे को कर दिया यार, हम भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास भी तो आप एक बार वही अपनी तो। नजर भिड़ाओ यार। अच्छा अंजलि, तुम कैबिन हाँ क्रू के लिए कर रही हो या फिर होटल मैनेजमेंट के लिए कर रही हो कोर्स? नहीं मैं कैबिन क्रू के लिए कर रही हूँ। कैबिन क्रू के लिए कर रही हूँ, एक्चुअली मुझे भी करना था, हाँ पता है मैं लेट हूँ। पैंडेमिक की वजह से मेरा वो भी नहीं हुआ एडमिशन। मेरी एडमिशन हुई थी जेटी एविएशन में, पर हुई नहीं।
इन्फॉर्मेशन मतलब क्या तुम मतलब कोई कोर्स करने वाली हो क्या इसके लिए? हाँ, करने वाली थी, मैं जेटी एविएशन में एडमिशन लेने वाली थी। तो उन लोगों ने बोला कि अभी तो ऐसा हो गया है, लॉकडाउन हो गया है, तो इंस्टीट्यूट और स्कूल्स वगैरह का ओपन होने का कोई चांस नहीं है और वो लोग परमिशन देंगे भी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ये ठीक है, परमिशन नहीं इसका आएगी। इंफॉर्मेशन ना, एक सेकंड, इसका इंफॉर्मेशन ना मैं तुम्हें व्हाट्सएप बताती हूँ, ठीक है? ये यहाँ पे डिस्कस हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली तुम मुझे पिन करना यार, मुझे भी बहुत ज़रूरत है और मुझे ये जान के आई गॉट शॉक्ड लाइक कि यार तुम भी फ्रैंकलिन से हो, मेरे भैया भी फ्रैंकलिन से हैं एक्चुअली। तो तुम मुझे पिन करना, ओके? हाँ हाँ ठीक है, मैं ठीक है। करती हूँ। चलो अंजलि बाय, मैं जा रही हाँ हूँ, क्लासेस बाय। मेरे स्टार्ट होने हैं 5 के, ठीक है ओके? ठीक है ठीक है। ओके, हाँ नाइस टू बाय, मीट टेक यू, केयर। बाय, टेक केयर, बाय। मन की बस एक ही इच्छा है कि हमारे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा